समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा प्रणाम। आज महाप्रभु पार्षद ब्रह्म हरिदास ठाकुर के और भी आज नित्य भक्ति विज्ञान भारतीय गोस्वामी महाराज की तिरुभाव जी की दोनों के तिरुभाव जी एक ही समय So today is the auspicious disappearance day of two great Vaishnavas. One is Srila Haridas Thakur Namacharya and another is Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. So today we are going to hear something about Srila Haridas Thakur Namacharya. Srila Haridas Thakur, he is the dearmost associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. After Haridas Thakur left this world, Sri Chaitanya Mahaprabhu feathers, wings. So bird can flew with its both the wings. With one wing it cannot fly. In the same way, Sriman Mahaprabhu, he was crying and said, today Haridas Thakur has left us. Consider that one of my hand is not working now. So Haridas Thakur was the Nijajan, the true Parshad of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Haridas Thakur's life history is very beautiful. So Haridas Thakur was helping Sri Chaitanya Mahaprabhu in Harinam Sankirtan. Haridas Thakur is the incarnation of both Brahma and Prahlad together. So Lord Brahma kidnapped the friends and cows of Lord Krishna. So considering his aparad offense, he came and meditated in Srimad Navadip Dham. नवद्वीप परिक्रमा नहीं किया? करेंगे इस साल करेंगे। ब्रह्मांड के जगत से भी कहा जाता है महाप्रभु के जन्म यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। Where Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, so that is the place exactly where Lord Brahma did thousands and thousands years of penance and austerity. And Lord appeared to Brahma there, and Brahma said, "O Lord, please forgive me for my offense."
भगवान कहने लगे, So that time Lord said, नवद्वीप धाम, सूर्यदेव धाम, चौदह धाम, उदारदेव धाम। so this is Shvetadvip Dham. Navadvip Dham, Shvetadvip Dham is called Audaryamay Dham. So whatever offense you did, it will get destroyed automatically. कोई भी अपराधी केवल एक बार नवद्वीप धाम में जाए, Any offender, एक बार नवद्वीप धाम if one time if he goes to Navadvip Dham and does Hari Bhakti there, नवद्वीप धाम में भजन तो बहुत दूर की बात कहा है। in Navadvip Dham doing bhajan is a far away. कहते हैं जिन हमारे दंडवत प्रणाम की फल प्राप्त हो जाता है। So in Navadvip Dham, शास्त्र में प्रणाम की महिमा का है। if you just do the parikram, Dandavat Pranam, it is more benefiting also. शास्त्र में भी पुनरुत्थि जन्म और कृष्ण प्रणामिनम नो पुनर्भवामि। हजारों अश्वमेध जप करने की जो फल है, After doing thousands and thousands of Ashwamedh, the great sacrifice, वो तो अश्वमेध whatever fruit you will get through that, just by doing one obeisance in front of Lord in Navadvip Dham, you will get those fruits. And again, no need to come back to this material world. पुनरुत्थि जन्म नहीं। शास्त्र में भी पुनरुत्थि और कृष्ण प्रणामिनम नो पुनर्भवामि। और स्पेशल भगवान ने कहा, ब्रह्मा मेरे जो धाम जो है सरस्वती धाम, So Lord said to Brahma, my Shvetadvip Dham, और इस धाम की महिमा क्या होगा? this has so much glories. So just one time Navadvip Dham, if you touch the dust of Navadvip Dham, just by one touch, many sins of the jivas will get vanished. Gaur Naam. So this is the glories of Gaur Dham and Gaur Naam. 10 prakar. 10 प्रकार के नाम अपराध के ध्यान रखते हुए परिणाम करना चाहिए, तब तो नाम में फल प्राप्ति होता है। So when you do Harinam, you should keep in the mind these 10 offenses and then you should do Harinam. Then you will get the fruit of Harinam. But in Chaitanya Charitamrita, if you say Gaur Nityananda one time, all the love manifests in your heart. No rules and regulations. Just one time, Ha Gauranga, Ha Nityananda. All your sins will get destroyed. So just by Gaur Nityananda name, oh mind, you always think about Gaur Katha. In this way, Lord gave darshan to Brahma and said, all your offense has been destroyed when you came into the Dham. You ask a boon or benediction, whatever you want to ask benediction, you ask, I'll give you. So Lord Brahma said, Prabhu, you want to give me benediction? Then don't make me to take birth in the high caste and always make me take birth in the lower caste. By taking birth in the high caste, we'll get ego, anger, so many things. I want to be humble, so make me in birth in the low caste. Lord's heart melted and his tears started to flow. And he said, Brahma, my heart is got melted by your words.
तो उस समय कहेंगे प्रभु जन्म जन्म आपके सेवा करते रहूं, यही बात है ब्रह्मा जी। And Brahma also asks, "O Prabhu, life after life I have to do your service. Give me this boon." And Lord said, "O Brahma, my Navadip Dham is Siddh Dham, Gaur Dham." नवदीप धाम के अनेक नाम, There are so many names for this Navadip Dham. गौरांग के So रूप में Lord said, मैं नवदीप धाम यहाँ पर मैं very soon I am going to appear in the form of Gauranga in the Navadip Dham. So where you did penance and austerity, I will appear in the same place. और मैं उस समय जगत दिव्य कल्याण के लिए And नाम संकीर्तन में for benefiting the entire world, I will propagate the Harinam Sankirtan. संकीर्तन के प्रधान सहायक बनो, सेनापति बनो, नाम संकीर्तन। So you become the prominent leader in that Harinam moment. ऐसे करके स्वयं भगवान So by saying this, the Lord gave the benediction to Brahma and he showed his Gaur Roop to Brahma. नवदीप धाम के स्वरूप क्या है दर्शन करो। And he also showed the Swaroop of this Navadip Dham. कृष्ण स्वरूप के तो सभी विदित है ना, जानते हैं। Everyone knows about my Krishna's form, but my Gauranga Swaroop is very confidential. So have the darshan of my Gauranga Swaroop form. In this Mayapur Dham, my mother and my father and I, we all appear. I appear in the womb of Sachi Mother. And my main goal will be to propagate Harinam and to benefit all the conditioned soul through the love of Harinam. So you help me in that moment. He said to Brahma. Lord said to Brahma. So Lord Brahma then had the darshan of Sri Gauranga Swaroop. So in this way Haridas Thakur is known as Brahma and Prahlad incarnation. Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavatam Granth, he has mentioned here about Haridas Thakur. पाइयताहार संग आचार्य गोसाई ओंकार करेण आनंदे अंतनाय हरिदास ठाकुर अद्वैत देव संगे आसन गोविंद रस समुद्र तरंगे। चैतन्य भागवत में आदि लीला, Chaitanya Bhagavat Adi Leela, in 16th chapter, 18th shloka, it is mentioned, where did Haridas Thakur appear? Budan village. And later he came to the banks of Ganga. कौन सा जिला डिस्ट्रिक्ट? शांतिपुर। So Budangram is somewhere near Shantipur.
हरदास ठाकुर नित्य सिद्ध पाठक। Haridas Thakur is the eternal servant of Lord हरदास ठाकुर नित्य ही रहता है। of Sri Chaitanya Mahaprabhu, नित्य and he always stays there in the Lord's Dham, always. इसलिए भगवान की परिकर भगवान के नित्य जन्म है, इसी कुल में जन्म लेकर के भगवान की सेवा करते हैं। So Lord's eternal associates take birth in any caste, and they also do service of Lord. They may come in the form of birds, animals also. So Bhaktivinoda Thakur writes in his poem, "Oh my mind, why do you have so much ego? Because you took birth in the high caste?" And Hanuman took birth in the caste of Hanuman. Jivi. आएगा और जाने के समय में नोचेगा। मैं जंगला से जो है मैं खाना देता हूँ और खा करके वो भी ऐसे हम। So Maharaj is telling this monkey is such an animal. It eats food from us and again it attacks back to us. And it's very bad animal. It always hankering for omen association, these monkeys. So how can you worship this kind of animal, monkey? But Hanuman, everyone is worshipping Hanuman. Prahlad Vibhishan. So Vibhishan took birth in the demons. भगवान रामचंद्र रावण के वध के उपरांत After Shri Ram slayed Ravan, when he came back to Ayodhya, in the cabinet of Lord Ram, Vibhishan was also present. Although he took birth in demon, see how he is sitting in the Lord's cabinet. Prahlad, topmost devotee, and he took birth in the family of demons. So there is no subject of this caste. It's only the subject of bhakti. Bhakti prasanti madhava. Bhakti is the only way to please Lord Krishna. Vyadasya kim acharanam. So this Vyad means hunter. Hunter, what kind of acharan he had? Dhruvasya kim vayo. What was the age of Dhruva? भगवान की आराधना करके प्राप्ति कर लेगा और क्या क्या है लोग है अच्छा द्वादश की आचरण वयो विद्या की Gajendrasya kya vidya? This elephant, Gajendra, what kind of knowledge it had? In which school it has studied? Just by the power of bhakti, he offered one flower to Lord, and Lord himself came running. Kubjaya kim rupam. What beautiful form Kubja had. But she had the mercy of Lord Krishna. Vidurasya ka dhana. Kula.
kula, Vidurasya kya kula? भगवान In which caste is Vidura born? उनके घर में भी But Lord went to his house and had food है, और in एक his होता house. है। फिर आते हो इससे क्या? और एक रह गया। है? उपजा हो गया अच्छा। उग्रसेन का क्या उग्रसेन के कौन सा पुरुष था? पौरुष था ना? वीर के दशरथ पिता। So what power did Ugrasen had? He did not had any power. उग्रसेन के प्रति कैसे स्नेह प्रति स्वयं भगवान राज सिंहासन में नहीं बैठे। Lord had such a love and कंस के affection. वध के उपरांत, After Krishna killed Kamsa, का क्या धन था? है, उन्होंने क्या किया? उग्रसेन के कारागार से so what Lord said? He freed Ugrasen from the jail and he gave सुदामा the किम धनम? royal throne to Ugrasen. Sudamna Kim Dhanam. Which money did Sudama had? ये कैसे परम मित्र भी बने? But Lord, how? He made Sudama as his best friend. भगवान के भक्ति वसई माधव। Bhakti Vashai Madhavam. भगवान भक्ति So Lord can be attained only by pure devotion, pure bhakti. हरिदास ठाकुर कृष्ण नाम के प्रति कैसे श्रद्धा भी रखा? Haridas Thakur, how he had Shraddha, faith on Sri Krishna Nam, नाम भजन करते। and how he was doing Nam Bhajan. इसलिए गंगा तीर में पुलिया में आकर के उन्हें भजन करने लगे गंगा के तट पर। On the banks of river Ganges, he used to stay and always do bhajan. एक सर्प आकर के उस गर्त में उनके पास One snake was staying in his small cave. स्थान को छोड़ के तो वो सर्प कहने लगे मैं साक्षात अनंत देव हूँ हरिदास। So Haridas Thakur just wanted to leave that place. तुम्हारे मुँह से जो शुद्ध नाम Haridas, this snake said, I am Lord Ananta himself, Adishesh himself. I just came here to hear the pure Harinam from your mouth. 3 लाख हरिनाम How Haridas Thakur was doing Harinam? He was doing 3 lakhs Harinam. 1 लाख हरिनाम उच्च स्वर से करते 1 lakh he used to chant in a loud voice. हरिनाम बनाने चाहिए हैं? ये सब पढ़ते नहीं। And Babaji Maharaj and so-called Apasampradaya, they say we should not chant loudly. बहुत उच्च स्वर से हरिनाम But here there is evidence for और them. 1 लाख हरिनाम 1 lakh Harinam used to chant very loudly, and 1 lakh he used to do in the Upanshu. Upanshu means like only chanting and hearing, कैसे करते थे? and another 1 lakh he used to do in mind. नाम जब से जीवित जाए लाल ठाकुर कहते हैं नाम क्योंकि बाबा जी ने समझा था बोले नाम जपनी है कीर्तनी नहीं है इसलिए कुछ बाबा जी संप्रदाय के लोग आज तक भी हरिनाम So this so-called Babaji Sampradayas, they say और दूसरी कोई नाम प्रकट कर दिया निताई को They say राम Nam, Harinam should not be chanted loudly, it should be chanted in your mind. And some other Babar Sampradaya, they change the mantra itself. They say Nitai Gaur, Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. So this is Apasiddhanta. उच्च स्वर से This is false propaganda. ये पशु पक्षी सब कैसे उद्धार होगा? So Chaitanya Mahaprabhu himself asking to Haridas Thakur, how can we deliver these birds, animals, trees and all? इनके उद्धार कैसे होगा? How they can be benefited? उच्च स्तर So Haridas Thakur says, just by chanting the Harinam very loudly, all these living entities can be delivered. पशुपति का बोली देना पड़े सुनी ले पशु पक्षी सब बलि देना पड़े उच्च स्तर नाम संकीर्तन में खाना जप करे है ऐसा बाबा जी को सुनाना चाहिए पढ़ बेटा कोई भी ना पढ़े। हैं पढ़ता नहीं पढ़ता है तो सुनता नहीं चोरा ना सुने धर्मेर कहीं हाँ दूसरा ना सुने धर्म में करते हैं ठीक बताए हैं हरिदास
ठाकुर नाम करते थे। So Haridas Thakur was doing Harinam. जवान लोग मुसलमान So this अत्याचार भी करने लगे। low caste people, Muslims, हिंदू राचरा they also attacked Haridas Thakur. तारियानी करो विचार बाकी वचन सुनी सही पापमती हरियाणी लतारी विचित्र बनी। हरिदास ठाकुर जब नाम संकीर्तन कर उस समय कुछ लोग उनके ऊपर Once, when Haridas Thakur was doing Nam Sankirtan, some people attacked him, some Muslims, and they said, being a Muslim, how can you chant the Hindu's name? And they took to their king. So they asked, Haridas, although you are Yavan, Muslim, how can you chant the Hindu's name? You have to be punished. तुम हरिनाम त्याग करो, कलमा उच्चारण करो, किंतु हरिदास ठाकुर ने क्या बोले कलयुग में जितने भी नाम हैं, And he said, नाम क्या है? and they said to Haridas Thakur, you give up your Harinam and chant our Allah prayers. So Haridas said, in this Kali Yuga, there are so many names, but in that topmost is Harinam. किंतु शास्त्र में लिखा गया कलयुग की धर्म क्या है? नाम Nama Sankirtan. नाम And in the Shastras it is mentioned, नाम संकीर्तन। the dharma of Kali Yuga, the duty कौन सा नाम? of Kali Yuga is Harinam Sankirtan. परिसंकर उपनिषद में Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama. हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये चार युग है, चार युग में So there are 4 yugas. नाम In different yugas, different Nam Sankirtans has been mentioned in Shastras. सप्तयुग में नाम In Satya Yuga, Om Namo Narayana. Huh? नारायण Narayana. नारायण परादेव परावेदा Narayano Paraveda, Narayano Parakshara, Narayana Paramurti, Narayana Paragati. This is the त्रेता युग के नाम Mahamantra of Satya Yuga. In Treta Yuga, what is the Mahamantra? नाम नारायण Nama Rama Narayana. नाम नारायण मैं नहीं रहूँगा मेरा याद है याद है? नाम त्रेता युग का मंत्र। मुकुंद Nama Narayana Satyam. कृष्ण कृष्ण से हरि मुकुंद वामन त्रेता युग के So Maharaj said, ठाकुर जी के हरि नाम Treta Yug's mantra. Sorry, I could not able to repeat. हरे मुरारे In Dwapar Yuga, Hare Murarer Madhukaita Bari Gopala Govinda Mukunda Shauri. So this was the Mahamantra of Dwapar Yuga. विष्णु श्री राम स्वयं नाम जगदीश In the Kali Yuga, what is the Mahamantra? Everyone, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Haridas Thakur is telling like this. In this Kali Yuga, the main Mahamantra is Harinam. In Kali Santarana Upanishad, it has been evidenced. But this Yavan Muslims, they are Nastiks because they do not worship deity, so they are very impersonal.
इसलिए हरिदास ठाकुर So Haridas Thakur बड़े मैं कर्म नाम उच्चारण नहीं करूंगा। दास ठाकुर करे ईश्वर he said, I will not chant the Karmanam. और केवल नाम He also started to say, Lord is one. एक होते हुए पर भी अनंत नाम में अनंत स्वरूप में Although Lord is one, He is manifesting in different forms, different और names. हिंदू शास्त्र पुराण और मुसलमान में पुराण में कोई भेद नहीं। पुराण And में जैसे the scripture of Hindus and Muslims, almost there is no difference. उल्टा अर्थ कर दिया। हाँ, भक्ति But विलास nowadays ठाकुर people are कहते हैं, speculating these कुरान things. से लिया हमारा चित धाम की वर्णन भी है उसमें। कहते कहते हमारे ईश्वर हेनम गाये चित्ते परी आनी हेनम परमेश्वर एक ही है। सबके हृदय में कोई विराजमान। So the Lord is one. आप लोग अच्छा से हमारा विचार। इसी प्रकार In this way, वो दुष्ट दुराचार है मुसलमान हरिदास ठाकुर के दंड so this foolish Muslims, they wanted to punish Haridas Thakur and they gave punish. What is that punishment? जब तक वो कर्मा नहीं पाठता 22 बाजार में 22 बाजार में उसे चाबुक से मार So he said, हरिदास ठाकुर they gave punishment. What punishment? To beat Haridas Thakur until and unless he chants the karma name. हरिदास ठाकुर के नाम की निष्ठा And Haridas Thakur said, उनके 22 बाजार में हरिदास ठाकुर so they started to hit Haridas Thakur, black and blue. So Haridas Thakur got fainted by taking so much beatings, and they threw Haridas Thakur into Ganges. These Muslim people always considering Ganges as impure, because whatever Hindus think it is pure, these Muslims think it, they just think opposite. So Maharaj is giving example like demigods and demons. Demigods always worshipping Lord, but the demons, they are doing opposite to it. Who is called as Devata? One who is devotee of Lord Vishnu, he is the Devata, demigod. And what are the demons? विष्णु भक्त भवे दैव आसित तत्व इस संसार में दो प्रकार की लोग रहते हैं एक दैव भावपन और एक उसको So in this material worlds also there are two kinds of people. भगवान के शिवग्रह के नहीं दिव्य अपराध One is the character of gods and one is the character of demigods. So असुर है सब लोगों के बोले they do not accept Lord's सब कैसा असुर personification, personal form. All these people are considered as demons. शिवग्रह की क्या है सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर और What is Sri Vigraha? Sachidananda Vigraha, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha, Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. किंतु सच्चिदानंद विग्रह के नहीं मान करके So this is the eternal and pleasurable form of Lord, and these people do not accept this form and they do impersonal worship also. कैसे दुष्ट प्रकृति है ये सब क्या है All these people are demons. राक्षस था In their previous life there were demons. इसको ऐसे समझो अभी भी तो राक्षस ही है, सब कुछ खाता है क्या। कोई सब राक्षस राक्षस क्या नहीं खाते So Maharaj is telling even now also they are demons.
टोकरी में क्या बोले भून करके खाते हैं कि पकवा कच्चा भी खा लेते हैं कुछ हैं? They are telling हाँ? चाइना में तो सब कच्चा ही खाते हैं। कितना असूल है in nowadays people, these kinds of people especially who are known as demons, राज they are eating all kinds of bad stuffs also. भगवान की फितरत नहीं मानते मंदिर में दर्शन करना है They accept Lord's temple but they don't want to come and have darshan of the Lord. करना है तो ऐसे दुष्ट लोग से If you want to do bhajan, then stay away from these kinds of people, Maharaj is telling. शास्त्र में बहुत वचन है In Shastras it is mentioned. In Shastras there are many kinds of words like this. देखो हरिदास ठाकुर कैसे कृष्ण कृष्ण स्मरण See how Haridas Thakur was doing Lord Krishna's remembrance always. तो उसी प्रकार जो हरिदास ठाकुर के चरण So, मारते मारते उसके In the same way, लग गया हरिदास होगा coming back to the story, Lord Haridas Thakur was punished. He was beaten very black and blue. छोड़ेंगे हमें ही प्राण में मार देंगे तुम्हें रक्षा करो ऐसे सुन करके हरिदास ठाकुर ध्यानस्थ हो गए है ठीक है क्या मर गया जाओ उसके क्या की गंगा में So he got fainted and they threw Haridas Thakur's body into the Ganges. मुसलमान गंगा के अपवित्र हो कितने दुष्ट आजकल तो एक बड़ा उसूल प्रकट है ना वो क्या है वो? जाकिर हुसैन ने क्या हुआ हाँ जाकिर हुसैन जाकिर नायक महाबदमाश। So Maharaj is speaking about Zakir Naik. उसे कई देशों He is a cheater. Ban कर दिया. And he has been banned in many countries. शास्त्र सिद्धांत कुछ नहीं जानते He doesn't know Shastra, Siddhanta, anything. महान ज्ञानी तो है He is a good scholar. महाज्ञानी है He is a Gyani और सारे मायावाद scholar. को अध्ययन करें But he knows only Mayavada philosophy. From Bible, Quran, everything. Only is taking only Mayavada philosophy. वो जो लोग स्टडी करते हैं वो लोग कहते हैं वो जो रेफरेंस देता है वो सब नकली है, जस्ट ऐसे ही बोल देते हैं, वो कोई पंडित नहीं है। हैं? आज जो कोट कोटते हैं ना वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के कुछ मिलता ही नहीं है। और ऐसे लोग भी जाते हैं मूर्ख लोग जाते हैं उसके पास And only foolish people go to these peoples ज्ञान नहीं है। who do not have any knowledge. वो उनको भी पूछा है, बोले राम कौन थे वो भी पूछता है So such a foolish people go there. पता नहीं तो हिंदू धर्म के बारे में तो पता नहीं हमारे साथ क्या विचार करोगे They ask the questions very silly. Who is Ram? और सब To Zakir Naik. उल्टे पुल्टे So they don't know how to ask questions also. And whom to ask question they don't know. और ज्यादातर वो मायावादी के साथ And many people are Mayavadis. वैष्णव लोग कोई नहीं जाते शुद्ध वैष्णव लोग The pure Vaishnavas, no one goes वो लोग to these kinds of people. जाता नहीं। बोले मुर्गों के साथ बेकार बेकार फूल मार करके क्या करें आप लोग जाते हैं बोले कि वो कहते माइक बंद कर देता है और इधर से बात And if any proper person goes and speak, they switch off the mic. वो भी बहुत चालाक भी है They are also very intelligent. आज हरिदास गंगा का पास हरिदास का शरीर डाल दिया. उसका बाद हरदास ठाकुर देखो गंगा में जब उसको प्रवाहित कर दिया हरदास ठाकुर तैरते तैरते पुलिया घाट में पधारे Pulia Ghat. और वहाँ So while floating in the Ganges, Haridas Thakur body reached Pulyagram, and he got conscious and he और हरदास started to chant Harinam there. तो विचार किया तो मरे इसे कहता है पीर ज्ञान करी सब कइला नमस्कार सकल जवान गण
पाइला विस्तार। जब हरिदास ठाकुर जब पुलिया गांव में था, When Haridas Thakur reached Pulia Gram, Pulia village, मर गया इसलिए करने चलो। so these people before they thought Haridas Thakur has dead, but Haridas Thakur was in a deep samadhi. गंगा में हरिदास ठाकुर बस And they threw to Ganga, and Haridas Thakur reached Pulia. पर आकर के हरिदास ठाकुर फिर पुनः Haridas Thakur started Harinam again. करके मुसलमान लोग भी भयभीत हो By seeing this, even the Muslim people got feared. They started to think. वीर ज्ञान करी सबे कहिला नमस्कार सकाल जवान का पाइला विस्तार। हरिदास ठाकुर की कृपा है जो Haridas Thakur was so mercy. Who beat Haridas Thakur? Even for them, Haridas Thakur did Krupa. And everyone started to do obeisance to Haridas Thakur. से हमें फल क्या मिलता है? So what is the fruit of doing pranam to Guru and Vaishnav? गुरु प्रातः काल में उठ करके गुरु वैष्णव के प्रणाम करो। So early morning you should wake up and you should do pranam for Guru and Vaishnavas. This is the first thing. गाय प्रतिदिन Guru, Vaishnav, cow, earth, all these things you should do pranam in the morning time. प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल को अपने हाथ के दर्शन करो। And you should have darshan of your hand. क्या बोला? Karagre vasate Lakshmi, Karamadhye Saraswati, सरस्वती Karamule tu Govinda, करमुले tu Govinda, Prabhate Karadarshanam. प्रातः काल में This is the mantra. उठ करके By waking up in the early morning and have darshan of your hand. हाथ के दर्शन करो। ऐसे शास्त्र में लिखा है। So in Shastras it is mentioned. शास्त्र ऐसे ही है, किसी न किसी प्रकार से इसमें भगवान के नाम करा दे। So Shastras want to do in hook or crook. The Shastras want to make Harinam. Karagre vasate Lakshmi. Lakshmi is the wealth. आपके घर में धन इतना आ जाएगा, विश्वास करके करे। धन की अभाव है, दुकान You में do it in चल the रहा है। faith. Within 7-8 days in your house there will be so much money. Maharaj is telling. नहीं कुछ विश्वास करके You should have some faith, but you don't have faith. है। And how can you expect the धन fruit? चाहिए बस, अरे अपने पास ही है। If you want money, then you have in your hand. Karagre vasate Lakshmi, है, गौरव मध्य च Karamadhye cha Saraswati. सरस्वती विद्या आ जाएगा। All kind of knowledge चलेगा। and good mind will come to you. और Karamule tu Govinda. Govinda. प्रभाते करो दर्शन। Prabhate Karadarshanam. तात्पर्य क्या है? What is the meaning of this? के नाम तुम्हारे मुख से निकाले। Some or the other Lord Govinda's name is coming out from your mouth. By the name of this Lord Govinda, everything is obtained to you. शास्त्र कम नहीं, The Shastras are not so down. इसी प्रकार से भगवान के Shastras are so intelligent. चलो आगे हम कथा। Hook or crook, they want to make you chant Lord's name by you. इसलिए कहते हैं पीर ज्ञान करी सभी कहिला नमस्कार सकाल जग जवान गण पाइला निस्तार। है? इस प्रकार हरिदास ठाकुर So in this way, Srila Haridas Thakur, he stayed in Pulia and started to do Harinam. और जहाँ पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे, Where Haridas Thakur was doing bhajan, एक सदर सांप बना। there was a snake, serpent, poisonous serpent. किंतु देखो हरिदास ठाकुर विचार करके इस स्थान पर आना चाहिए। Haridas Thakur यहाँ पर एक thought, सांप है। okay, हरिदास ठाकुर भक्तों के दुख को देख हरिदास ठाकुर भक्तों के दुख को देख करके नाग के सांप के आह्वान करने बोलने लगे सप्तगिरी आते थके महासा। so some of the devotees said to Haridas Thakur, "Oh Maharaj, there is a snake here, poisonous snake. Please vacate this place." यहाँ पर जो सांप So by seeing the devotees' condition, भक्त लोग all devotees are so fear. Just to pacify them,
Haridas Thakur just thought that he will हरिदास shift his place from this place to another. गड्ढा से निकल करके आ गई, आकर के क्या बोले, हैं? So this snake came out of its हरिदास hole and started to speak to Haridas Thakur. Oh Haridas Thakur, I am Lord Anantashesh himself. हम इसलिए आए हैं I have come here to hear Harinam from your lotus mouth. देखो शुद्ध भक्त की नाम की महात्मा, This is the specialty of the pure devotees. शुद्ध भक्त की नाम मुखारविंद से नाम की The नाम Harinam, सुनने के लिए स्वयं just to hear भगवान, the Harinam from the lotus mouth of the pure devotee, देखो हरिदास Anantashesh came here नाम सुनो, and near to Haridas Thakur. शुद्ध भक्त जो नाम करते हैं उसके सुनो, हरे कृष्णा Hari हरे कृष्णा कृष्ण, Bhagavatam, when Krishna was playing the flute, सारे मुनि ऋषि लोग पक्षी लोग धारण all kinds of sages, Muni, Rishi, they used to take the form of birds and they used to sit on the trees of Vrindavan. When Krishna was playing the flute in the fifth scale, all the birds सप्तम सुर से वंशी in the form of rishis in the form of birds, they used to come. पक्षी स्थिर हो जाए, When Krishna used to play his flute in the seventh scale, all the birds used to be stagnant, होगा वृंदावन एक उसमें stunned. वेणुगीत में श्लोक है ना, प्रायो This is there in mentioned in Venu Geet. एक सखी दूसरे सखी कहते हैं ये माँ का कार्य है, ये सखी नहीं, ये वृंदावन में पक्षी की साधारण पक्षी नहीं है, ये साक्षात This bird in Vrindavan is not ordinary. है हमारे प्राण में गोविंद, These are all sages and great sages. They have come here to hear the flute sound of Lord Govinda. इसी प्रकार हरिदास ठाकुर के नाम So in this way, to hear the Harinam from Haridas Thakur's lotus mouth, और नाम कैसे, Lord- हरिदास तुम्हें उच्चारण है, कुछ दुष्ट लोग कहते हैं, अरे कौन शास्त्र में है जो जो चिल्ला चिल्ला से So, भगवान के नाम पर- some demon people started to say, in which Shastras it is mentioned that you should do Harinam very loudly. जोर जोर से कि तू हरिनाम क्यों, Why are you doing so loudly? Can't you do in your mind? मानी मान हरिनाम करो, क्योंकि हरिदास Do Harinam in mind. गीतादि बोलिते ना पड़ी, सुनी नी हरिनाम तारा सब तोरी, But what did Haridas Thakur said? आपने से तोरे उच्च संकीर्तने परोपकार करे, अते उच्च करी संकीर्तन करिले सतगुण फल है सर्वशास्त्र बले, ये समस्त शास्त्र उदाहरण देगा, हम शाम की स्टोरी। So we will going to hear this at the evening Harikatha. Now Maharaj is winding up his session. कीर्तनीय है, कीर्तनीय नहीं, So how this Apasampradaya people speak and all these things we will see in the evening. हम थोड़ी करें, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत भी तो उदाहरण देगा। So in Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, there are so many examples to chant the Harinam very loudly. So we will hear again continuation in the evening. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhesha Krupasindhu Bhesha Patisanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.